Welcome back, students. Hope you are fine at your homes. So, today we are here with our next topic, that is uniform motion and non uniform motion. So far, we have done the two topics. One is the basic description of motion, and also the motion along the straight line, which involved displacement and distance. And today we are going to start the topic, that is uniform and non uniform. Students, जो motion होता है वो uniform भी हो सकता है and it can be non uniform also. Like let us talk about the uniform motion. Uniform motion कब होता है? When the body is covering equal distance in equal intervals of time. Let us suppose body ने first 1 hour में 60 किलोमीटर्स ट्रैवल किया टाइम, एंड इन अदर्स 1 hour, नेक्स्ट 1 hour में भी बॉडी ने 60 किलोमीटर ही कवर किया, एंड इन थर्ड 1 hour उसमें भी बॉडी ने 60 किलोमीटर ही कवर किया. मीन्स हर घंटे में बॉडी है जो वो 60 किलोमीटर ही ट्रैवल कर रही है. मीन्स व्हेन द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन वी से दैट द मोशन है जो बॉडी का, इट इज़ uniform motion. Clear? So now let us take example of non-uniform, that is if the body covers unequal distance in equal intervals of time. Means अगर हम interval same रखें and body unequal distance travel कर रही है, like first 1 hour में body is covering 60 kilometers, and then other 1 hour the body is covering like we can say 30 kilometers, and in third 1 hour body covered 20 kilometers only. तो इस केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है पर यूनिट टाइम इज़ नॉट सेम. फर्स्ट आवर में 60 किलोमीटर्स है, अदर 1 hour में 30 है, एंड नेक्स्ट में 1 hour में 20 किलोमीटर्स ही ट्रैवल किया बॉडी ने. देन वी से दैट द मोशन ऑफ द बॉडी इज़ नॉन यूनिफॉर्म. एग्जाम्पल, जैसे कोई कार मूव कर रही है ऑन द क्राउडेड प्लेस, तो कभी हमारी स्पीड ज़्यादा हो जाती है कार की, कभी कम हो जाती है. जब कोई व्हीकल आगे आ जाता है तो वी स्लो डाउन आवर व्हीकल. सो इन दैट केस आवर मोशन इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन की कोई एग्जांपल, व्हेन वी आर मूविंग ऑन अ हाईवे में बहुत कम ट्रैफिक होता है और हमारी गाड़ी बिल्कुल सेम स्पीड से ही ट्रैवल करती है. सो देन वी से दैट द बॉडी इज मोशन इज़ uniform motion. Okay, so to describe the motion we need a term, that is speed. Also the speed क्या होती है? Speed is a distance travel per unit time. जैसे speed हमने केस में डिस्कस की थी, that 1 hour में 60 किलोमीटर्स, तो स्पीड क्या होगी वहाँ पे? 60 किलोमीटर पर आवर. दिस इज द स्पीड. So that is the speed of an object is defined as the distance traveled by an object per unit time. So distance is basically denoted with s, and जो time होता है उसको t से denote करते हैं symbol से. Clear? And इसका formula is v is equal to distance upon time. Clear? And जो SI units हैं speed के, that will be, हम हमेशा मीटर पर सेकंड में ही speed लेते हैं. That is the SI unit of distance, that is meters, and SI unit of time is seconds. So it is meter per second, that is our SI unit of the speed. Clear? And also students, जो speed है, it do not specify the direction of the body, so we consider it as a scalar quantity. It gives us only magnitude, like 60 kilometer per hour. It is telling us only the magnitude, not the direction. हमें नहीं बता रहा. This is the scalar quantity. Also CGS units, जो smaller magnitudes वाले units होते हैं, that is centimeter, grams and seconds वाले units होते हैं, उनमें हम centimeter per second इसके units लेते हैं speed के. Okay. So let us next proceed to the types of speed. Types होती हैं speeds की, that different types of speeds could be there. Like uniform speed is there when a body is covering equal distance in equal intervals of time. That is also considered as a uniform motion. That is a uniform speed. Non-uniform speed, when body do not covers equal distance in equal intervals of time, जिसे हम non-uniform motion भी बोलते हैं. That is the car moving on a crowded place. So that will be the non-uniform motion here.
ऑल्सो एवरेज स्पीड भी हम निकालते हैं, लाइक हमारा कोई जर्नी है हमारी कोई ट्रिप की, तो हमने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एंड टोटल टाइम कितना लगा जाने का, दैट गिव्स अस द एवरेज स्पीड, कि हम एवरेज कितनी स्पीड पे गए टू द ट्रिप। लाइक लेट अस सपोज हमारा जाने की स्पीड वाज 40 किलोमीटर पर आवर, आने की स्पीड वाज 60 किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज स्पीड विल बी 50 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज द व्हाट वी गेट टू नो फ्रॉम द एवरेज स्पीड। इट इज़ कैलकुलेटेड इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है जब हमारी वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, कभी बढ़ जाती है, स्पीड कम कम हो जाती है, तो देन वी यूज़ इट एज अ एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। क्लियर। एंड नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी भी एक मोमेंट पे कितनी स्पीड है, जैसे हम कभी ओडोमीटर स्पीडोमीटर चेक करते हैं तो देखते हैं कितनी स्पीड पे जा रही है, दैट इज़ द इंस्टेंटेनियस स्पीड जो हम एक मोमेंट के लिए चेक करते हैं। द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इट इज़ मेजर्ड बाय द डिवाइस स्पीडोमीटर, जो हर एक व्हीकल में लगा होता है। क्लियर। सो दिस इज द स्पीड पार्ट एंड नाउ लेट अस प्रोसीड टू द वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी में व्हेन द स्पीड की हमें डायरेक्शन भी पता होती है, लाइक बॉडी इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो here we are given with the direction also and also with the magnitude। हमें magnitude भी पता है plus direction भी पता है। when the direction and magnitude we know, that quantity is known as vector quantity। so जो velocity जिस केस में हमें डायरेक्शन भी पता होती है मोशन की, कि किस डायरेक्शन में बॉडी इज मूविंग with the speed, then we say that it is the velocity that is given। so it is also defined as the displacement per unit time, because displacement क्या होती है? it gives us the direction of the body, that is the that specifies the velocity of the body, कि किस डायरेक्शन में बॉडी इज मूविंग। सो इसका जो फॉर्मूला होता है, दैट इज वेलोसिटी इज गिवन बाय डिस्टेंस, that is displacement per unit time। it is also having the units that is meter per second। clear। मीटर पर सेकेंड कहाँ से आए? it is the SI unit of displacement। जिस displacement क्यों यूज़ किया? because there is a direction। it is direction is specified only by the displacement। तो that is why हम displacement की ही बात करेंगे इस केस में। then the SI units will be meter per second, and the velocity is a vector quantity which have a magnitude also as well as a direction also, and its SI units CGS units हैं जो, that is a centimeter per second। clear। next is the types of velocity। there are basically the same like the speed types, that is the one is uniform velocity when the body is covering equal displacement here in equal intervals of time, then we say it is a uniform velocity। equal displacement cover कर रही है means equal length travel कर रही है body, then we say it is a uniform velocity। non uniform velocity when body covers unequal displacement in equal intervals of time, then we say it is a non uniform velocity। average velocity का भी same ही formula है, but we replace the distance with the displacement here because displacement specifies the direction। okay। and in case of in case of uniform motion if we are having, then we simply use this formula। अगर हमें uniform motion दिया है, that body is moving with the uniform motion, उसकी initial velocity plus final velocity divided by 2 कर देते हैं, that gives us the average velocity। okay। एंड ऑल्सो बेटा एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड सेम भी हो सकती हैं किसी केस में, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। व्हेन द बॉडी इज़ मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन, उस केस में एवरेज स्पीड भी उतनी ही आएगी जितनी कि हमारी एवरेज वेलोसिटी आएगी। क्लियर।